Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 17. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter we have been discussing is morphology, and the topic which we will discuss today from the contemporary linguistic books written by O'Grady is other morphological phenomena. Um, why other morphological phenomena if he has been discussing the processes that contribute to word formation and the structure of words were discussed. So, what was then the need for this topic, other morphological phenomena? This topic was given because the processes which we have been studying in the previous pages, those were very common processes and very central processes. But now he wants to talk about those processes which are not very common and which are not very central. So that's why he has given the heading other morphological processes, other morphological phenomena. Though in these phenomena, we will study the same thing, the processes that contribute to word formation. So this is the reason for giving this topic of other morphological phenomena. In this main topic, the other morphological phenomena, we will discuss two types of processes. One is that which is related with inflection. So we will discuss the processes primarily related with inflection, although they are not very common. And there are those processes which are not related with inflection. So in other morphological phenomena, in the first one, which are related with inflection, we will study these four: internal change, suppletion, reduplication, tone placement, and in those processes included in other morphological phenomena which are not related with inflection, we will study cliticization, conversion, clipping, blending, back formation, acronyms and initialism, and onomatopoeia. You are familiar with most of them except one or two, because you have done all these topics or most of these topics from Georgiol's book. Today our topic will be, of course, the main topic is other morphological phenomena, and the subtopic is processes primarily related to inflection. But there are four processes in this topic, and we will discuss the first topic, that is the internal change. So this is what we are going to discuss today, the internal change. As I said that in the previous pages we discussed the processes that contribute to word formation, but those were the most common ones and the central processes. Now we are discussing other morphological processes which are actually mainly of two types: those that are related with inflection, and those that are other sorts of phenomena and not related with inflection. So the processes related with inflection are being discussed here. The first one is our topic for today, and that is internal change. And in internal change, we will discuss two subtopics: the ablaut and the umlaut. These are the two main topics. Both of them are German words. So let's begin this internal change, which is related with inflection, and then let us go further in order to find out uh, what happens in ablaut and umlaut. The internal change here, which is related to inflection and which is called ablaut, is
in which one non-morphemic segment is replaced with another non-morphemic segment. For example, let us take this word sing, in which you have E as a vowel, and which is a present form, and its past form is saying, in which E is replaced by A. E is also a non-morphemic part or segment. Segment means part. Non-morphemic because E doesn't have any meaning and it isn't a morpheme, so therefore non-morphemic part. It is replaced with A, which is again non-morphemic because A doesn't have any meaning separately. And there is a change in the internal vowel. Therefore, it is called internal change. E, which is internal, which is in the word sing, sing, and A, which is internal in the word sang. E is changed with A internally, therefore, it is an internal change. And the present form of the verb is converted to the past form. This uh, conversion, this replacement, or this substitution, which is a non-morphemic substitution because E is a segment, a part which is not a morpheme. A is segment or part which is not a morpheme. And when this replacement takes place, the grammatical contrast is created. So sing therefore is present and sang is past. So there is a substitution, a replacement of one non-morphemic segment for another non-morphemic segment to show some grammatical contrast. And this is referred to as ablaut, the substitution of one non-morphemic segment or part for another to show a grammatical contrast. This is referred to as ablaut. So ablaut means that one non-morphemic segment is replaced with another non-morphemic segment to show some grammatical contrast, in this case present and past. The same is the case with sing and sank, drive and drove, foot and feet, goose and geese. But we will discuss these two examples down there in umlaut. So, however, this is that change, internal change, this type of change which happens in sing and sang, sink and sank, drive and drove by changing the vowel sound is called ablaut. Uh, Ablaut, the word is derived from German. Ab means down, reducing, or gradate. Gradate means grade. E is one grade, A is another grade, A is another grade. These are grades. Laut means sound. So ab means gradated or reducing or down. For example, not when it is reduced as you find it in can't or couldn't, it is reduced or removed. And loud means sound. So it is the gradation of sound, and this gradation of sound took place here as we discussed. Sing, sang, sing, sang, sink, sank, drive, drove. So this change is referred to as ablaut. And ablaut can be defined, if this definition looks easier to you, you can use this definition, that ablaut is a
systematic variation of vowels, that vowels uh, becomes different. It is a variation in vowels in the same root. Sing and saying is the same root or affix, or in related roots. So sing and saying, sung are the same roots, but song is a related root. The variation in vowels of these same roots or related roots or affix is called ablaut. So you can use this definition also uh, as you wish, or this description is also enough. This is called ablaut. Let me do this for you in Urdu so that you understand it fully. ये छोटा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें कुछ वजाहतों की अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि इस लेक्चर में अदर फोनोलॉजिकल फिनोमेना डिस्कस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना डिस्कस होंगे, और फिर हमने कहा कि ये जो अदर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस ये दो किस्म के हैं। एक वो जिनका ताल्लुक इन्फ्लेक्शन से है। अब इन्फ्लेक्शन क्या है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेक्शन जो है, अगर आप इसको ले लें, इन्फ्लेक्शन जो है ये मॉडिफिकेशन of a words form to indicate grammatical information of various sorts. इन्फ्लेक्शन ये है कि आप लफ्ज़ में कोई चेंज लाएं और ये चेंज ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को तब्दील कर दे। मसलन, और हमने 8 किस्म के इन्फ्लेक्शन पढ़े थे जिसमें 2 नाउन से रिलेटेड हैं। ये एस प्लूरल बनाने वाला एक इन्फ्लेक्शन है। देखिए एस आप लगाते हैं तो ये एक इन्फ्लेक्शन है जिससे एक ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है और सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो इसलिए हमने इधर कहा कि इन्फ्लेक्शन जो है मॉडिफिकेशन ऑफ ए वर्ड है, या पढ़ भी चुके हैं, और ये मॉडिफिकेशन ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करती है और इससे तब्दील हो जाती है। ये सिंगुलर, प्लूरल और ये पोजेसिव है। फिर वर्ब्स के लिए ये 4 हमने किए थे और एडजेक्टिव्स के लिए ये 2 किए थे। तो यूं हम ने कहा कि जो इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड हैं उनमें एक इंटरनल चेंज है, सप्लीशन, रिडुप्लिकेशन, टोन प्लेसमेंट, इन सब को हम पढ़ेंगे। और अदर प्रोसेसेस में क्लिटिसाइजेशन, कन्वर्जन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन, एक्रोनिम, इनिशियलिज्म और ऑनोमेटोपिया। इनमें से अक्सर से तो आप वाकिफ़ हैं और आपने किए भी हुए हैं। अगर आपको जब मैं ये पढ़ाऊँगा और वो मुश्किल लगती है इस किताब से तो आप उसको योल से भी कर सकते हैं। तो हम इंटरनल चेंज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने इसमें बात ये की कि ये मेन टॉपिक है और ये मेन टॉपिक इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले से हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस तो पढ़ रहे हैं, तो फिर अदर की क्या ज़रूरत है? तो अदर की ये ज़रूरत है कि जो ये प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे ये आम नहीं है। अभी तक जो हो रही थी कॉमन थी और सेंट्रल थी, ये आम भी नहीं है और ये सेंट्रल भी नहीं है इसलिए इसको अलग हेडिंग दी है। वरना तो जो अभी तक हमने सारा डिस्कस किया इस चैप्टर में वो मॉर्फोलॉजिकल ही तो था। तो इनमें से ये 2 किस्म के हमने लिए। फिर हमने लिया इंटरनल चेंज को, और हमने बात ये की कि जब आप सिंग को सैंग में तब्दील करते हैं तो एक इंटरनल वावल जो कि ई है ए में चेंज हो जाता है, और इसी तरीके सिंग, सैंग और ड्राइव, ड्रो में तब्दील हो जाता है। तो ये इंटरनल चेंज की एग्जाम्पल है। इंटरनल चेंज अगर इस तरह हो जैसे सिंग और ड्राइव में है, जो सिंग
اور سینک اور ڈرو بن جاتا ہے جس میں صرف واول چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایبلاؤٹ کا نام دیا جاتا ہے اور ہم نے ایبلاؤٹ کی یہاں سے ڈیفینیشن بھی پڑھی. یہ اس کا آریجن ہے کہ ایب کا مطلب ہوتا یہ جرمن لفظ ہے ڈاؤن یا ریڈیوسنگ یا گریڈیٹڈ یا گریڈیشن اور لاؤڈ کا مطلب ہے ساؤنڈ. تو یہ ساؤنڈ گریڈیشن ہے ای سے اے دوسرا گریڈ ہو گیا ہے. تو یہ تو اس کا معنی ہوا. پھر اس کی تعریف یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں a systematic variation of vowels in the same root جیسے سنگ سینگ سنگ اس میں روٹ ایک ہی ہے اور افکس اور کبھی کبھی افکس بھی ہوتا ہے اور ان ریلیٹڈ روٹس. اب سانگ اس کا ریلیٹڈ اس کے ساتھ متعلقہ روٹ ہے یا افکس تو اس کو اس واول ویریشن کو ایبلاؤٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ اس کو ایبلاؤٹ کہتے ہیں. یہ جو واول چینج ہوا ہے اس کو ایبلاؤٹ کہتے ہیں. ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. پروسیسز پرائمریلی ریلیٹڈ ٹو انفلیکشن میں انٹرنل چینج کو ہم کر رہے ہیں. انٹرنل چینج انٹرنل تو اندرونی کو کہتے ہیں یہ اندرونی چینج ہی ہے. انٹرنل چینج از اے پروسیس یہ ایسا عمل ہے دیٹ سبسٹیٹیوٹس جس میں ایک کی جگہ دوسرا ون نان مارفیمک سیگمنٹ ایک غیر مارفیمک ٹکڑا لگایا جاتا ہے تبدیل کیا جاتا ہے فار اندر دوسرے نان مارفیمک سیگمنٹ سے ٹو مارک اے گرامیٹیکل کنٹراسٹ ٹو مارک ٹو شو کہ گرامیٹیکل فرق بتایا جا سکے. تو یہ انٹرنل چینج کی تعریف ہو گئی. نان مارفیمک اس لیے کہ ای مارفیم نہیں ہے نہ اے مارفیم ہے کیونکہ یہ کچھ میننگ الگ سے ان کو نکال دیں تو یہ میننگ نہیں رکھتے. تو یہ نان مارفیمک ہے اور گرامیٹیکل کنٹراسٹ یہ پریزنٹ ہے اور یہ پاسٹ ہے. ایز illustrated in the following pairs of words تو یہ اس میں illustration ہو گئی ہے. Verbs such as sing, sing and drive form their past tense by changing the vowel. یہ past tense ان کا بولتا ہے جب vowel کو change کرتے ہیں. Example from E to A in the first two examples. Sing, sang, sing, sang. The term ablaut is often used for vowel alternations. جب vowel کی ایسی تبدیلی ہو تو اس کو ablaut کہتے ہیں اکثر. That mark grammatical contrast in this way. یوں یہ ایک grammatical contrast بنتا ہے تو اس کو ablaut کا نام دیا جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو ablaut کی سمجھ آ گئی ہے. ablaut کی origin پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے اور ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر لیا ہے. آپ اس کو پڑھیں اور یاد کریں. We'll now go to the next process related with inflection where internal change takes place, and this is, you can see, page number 120 in your book, Contemporary Linguistics by O'Grady. In this process, in the umlaut process, we take the example of goose and foot. The plural of goose is geese and the plural of foot is feet. You can see again that vowel change. But this is also important to know a little about the front vowel and the back vowel and what is meant by the front vowel and the back vowel. We need to find out what is meant by the front vowel and the back vowel. This is the chart which is called as the IPA chart, International Phonetic Alphabets, and you will study this in detail in your fourth semester. However, you can see this
diagram shows the structure of a tongue. This is the tongue. This is the front part of the tongue. This is the back part of the tongue, and it is the middle part. This is the front part when the tongue is raised and the mouth is in closed position. And this is the front part of the tongue when the tongue is lowered down and the mouth is in the open position. So these are the different positions of the tongue, and the different positions to which the tongue goes when different vowels are pronounced. For example, when this vowel is pronounced, E, you can hear this E vowel. E, It is called as the front close vowel. Close vowel means that when you pronounce this, your mouth is relatively closed and your tongue is in the forward position. But if you look at this sound, O, which is oo sound, this is pronounced when your tongue goes from this front position to back position. This is back position, and it is not fully closed, neither is it fully open. It can be called close mid position. However, we are interested in the E, front position and in the O, back position. And then if you look at this one, A, this position is almost open position, but it is front. It is front close because the mouth is almost closed when you pronounced E sound and the tongue goes up and front. Here the tongue goes back A, and front. So these three are important here. This is E, front close, this is front A, open, and this one O, is back close mid. So these are the different places to which your tongue goes when you pronounce different types of vowels. So this one, as we said, is the front, O is back, and A is front but it is open, while E is front but it is close. After knowing all about these things, we can now discuss umlaut. Let us take this example of goose. Goose is a modern word, but it came to be called goose or the plural geese slowly and gradually passing through history. So we need to know about that history through which this word now has become goose or geese. What was it in the beginning? In Old English, the singular was this one, goose. Instead of goose, in Old singular English was goose. The plural was goosey. Now you see that E, as we discussed, is a front vowel and O is a back vowel, as I told you. E is a front vowel, as I said, E, is a front vowel, O, is a back vowel. And this front vowel was attached towards the end. Due to this being front, this E, there was an effect on this O, and this O became A. This O became A. There was an effect on the O sound, it became A sound because of this E sound. This change when one phonological item like E sound
changes the phonology or the sound of the preceding sound is called umlaut. So this was that umlaut which took place. A is a front version of the vowel O, as we discussed. A is front. In this case, as you can see, this sound. A, This is a front sound, as I said, and this is the back sound. So this front version of U was there, and then uh, that E, loss of the plural suffix, was lost with the passage of time, and this A was changed to A, changing gas to guess or guess, and then this A was changed to A, and A was then changed to E, which is completely front, and it changed into geese. This whole process is referred to as umlaut. So umlaut again is a German word, and its actual meaning is means transforming or changing, and laut means sound. So the sound changes here through the passage of history, and this is called umlaut. So this process umlaut is discussed in this second um, item. The first was ablaut and the second now umlaut. तो ये उर्दू में भी सुन लें. हमने इंटरनल चेंज की बात करनी है, प्राइमरीली रिलेटेड टू इन्फ्लेक्शन प्रोसेसेस, और अब हम करेंगे umlaut की बात. umlaut जो है ये तारीख में, लफ्ज़ों की तारीख में और लैंग्वेज की तारीख में एक वावल की वजह से जो आखिर में आता है और जो फ्रंट है, दूसरे वावल जो इससे पहले आता है ओ की तब्दीली है, इस फ्रंट की वजह से उसका भी फ्रंट में तब्दील होना है. यह अमल umlaut के नाम से याद किया जाता है, जो कि जर्मन लफ्ज़ है. तो ये आपको समझ आ गई है कि इसमें जो बैक वावल है ओ, ये फ्रंट वावल ए और फिर बाद में ई बन गया है, तो ये umlaut कहलाता है. हम इसको रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, तो हमने इसको अलग से लिया और इस पे टाइम भी गुजारा. सम इंटरनल चेंजेस रिफ्लेक्ट, बाज इंटरनल चेंजेस हमें दिखाती हैं फोनोलॉजिकली कंडीशन अल्टरेशंस, आवाज के लिहाज से तब्दीली जो कंडीशन की जाती है, और कंडीशन ये होता है कि अगर आखिर में फ्रंट वावल आ रहा है तो ये इससे पहले जो वावल आ रहा है ये भी फ्रंट हो जाएगा, तो ये कहलाता है फोनोलॉजिकली कंडीशन अल्टरेशन. आवाज के लिहाज से तब्दीली जो कंडीशन हो गई है, शर्ती हो गई है, आय का शर्त हो गया है ई का साउंड का, जिसकी वजह से ओ ई में चेंज हो गया है फ्रॉम अर्लियर स्टेज इन द लैंग्वेजेस हिस्ट्री. ये अर्लियर स्टेज है लैंग्वेज की हिस्ट्री में, इसकी वजह से. द इरेगुलर प्लूरल्स गीज एंड फीट केम अबाउट इन दिस वे. गीज और फीट जो कि ऑफ कोर्स एग्जांपल्स तो इंटरनल चेंज के हैं, लेकिन ये umlaut के एग्जांपल्स हैं, जिसकी तब्दीली ई की ऊ की ई, और इसमें भी ऊ की ई, ये तब्दीली जो आई है, तो ये एक हिस्टोरिकल चेंज है, हिस्ट्री की वजह से आया है. the original back vowel o in the word goose, ओरिजिनल बैक वावल जो गूज में था, यहाँ पे गोज, एंड फुट, और जो फुट में था was fronted, ये फ्रंट हो गया. बैक वावल
फ्रंट हो गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस डायग्राम में, ये देखिए ये बैक वावल है O, और ये फ्रंट वावल हो गया है। E, ये बैक और फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रंट वावल, और ये इस वजह से कि इस पे असर हुआ फ्रंट वावल का इन द ओल्ड प्लूरल सफिक्स ई। ओल्ड प्लूरल सफिक्स ई ये है गोज, ये पुराना गूज है, गोजी ये पुराना प्लूरल है, इसकी वजह से ये ओ ए में चेंज हो गया और ये ए फिर ए में चेंज हो गया और ये ए फिर ई में चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है ये umlaut कहलाता है, विच वॉज, तो ये फ्रंट वावल इन दी ओल्ड प्लूरल सफिक्स ई की वजह से हुआ है, विच वॉज सब्सिक्वेंटली ड्रॉप्ड, जो फिर ड्रॉप हो गया, ये आई ड्रॉप हो गया, अब इसमें आई नहीं है। दिस टाइप ऑफ चेंज इन इंग्लिश एंड अदर जर्मैनिक लैंग्वेजेस इज नोन एज umlaut। ये umlaut ये तब्दीली कहलाती है। तो ये हमने डिस्कस किया, ये पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें बात ये है कि आप इसको, ये जो इंटरनल चेंज है, इनफिक्स ना समझें, क्योंकि जब हम इनफिक्स लेते हैं, जैसे हमने तगालुग लैंग्वेज में सोलाट को लिया था और इसका इनफिक्स था सिनोलाट, तो इसमें बात ये थी कि अगर आप ये इन हटा दें तो सोलाट अलग से एक मार्फीम बनता है, लेकिन अगर आप फुट में ये ओ हटा दें तो एफ टी अलग से मार्फीम नहीं है, गूज में ओ हटा दें तो जी एस ई अलग से मार्फीम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप सिंग में आय हटा दें तो एस एन जी अलग से मार्फीम नहीं है, लेकिन अगर आप सिनोलाट से इन हटा दें तो सोलाट एक अलग से मार्फीम बनेगा, जो कि मीनिंगफुल एलिमेंट है। तो ये इन दोनों में फर्क हुआ। तो ये मैंने नहीं पढ़ना है, बस ये आपको समझा दिया, इसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए डिटेल से समझाया कि अगर आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज़ एब्लाउट, तो आप ये कह दें कि ये इंटरनल चेंज जब होता है और एक नॉन मार्फीमिक सेगमेंट दूसरे नॉन मार्फीमिक सेगमेंट को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो इसको एब्लाउट कहते हैं। और फिर आपको माखस भी बता दिया है कि ये जर्मन लफ्ज़ है, एब का मतलब है डाउन या रिड्यूसिंग या ग्रेडेटेड, ये ग्रेडेशन हमने मतलब लिया, और लाउट का मतलब है साउंड, तो ये साउंड ग्रेडेशन इसका एक्चुअल मतलब है। फिर हमने ये डेफिनेशन भी इसकी पढ़ी। तो यूं ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हमने इस पर टाइम गुजारा। प्रोसेसेस प्राइमरीली रिलेटेड टू इन्फ्लेक्शन में इंटरनल चेंज का प्रोसेस। थैंक यू एंड गुड लक।